Now factors affecting, sorry. So factors affecting the speed of sound in gas. So speed of sound in a gas is affected by change in density, temperature, humidity and direction of wind. तो ये चार फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड जो है डिपेंड करता है गैस में. तो ये चार फैक्टर्स क्या क्या हैं? पहला डेंसिटी ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा डायरेक्शन ऑफ विंड. सो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी हम लोग कह रहे हैं स्पीड v इज इक्वल टू गामा p अपॉन रो का स्क्वायर रूट. तो बिकॉज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है. So because v is inversely proportional to square root of density, speed of sound is inversely proportional to square root of density of the gas. The density of oxygen is 16 times that of density of hydrogen. Therefore, speed of sound in hydrogen is 4 times the speed of sound in gas. So because inversely proportional है, जिसका density ज़्यादा है speed कम, तो बिकॉज ऑक्सीजन का डेंसिटी 16 टाइम्स ज्यादा है हाइड्रोजन से, सो इसीलिए हाइड्रोजन का जो स्पीड है 4 टाइम्स ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, ठीक है. स्क्वायर रूट 16 का 4 होता है, तो 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. So speed of sound in a gas increases with increase in temperature of the gas, ठीक है. तो वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी पे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पे. सो effect of temperature, the speed of sound in a gas increases with increase in temperature of the gas. The reason is that with the increase in temperature, the density of gas decreases. Temperature increase करेगा तो density decrease करेगा, and consequently the speed of sound increases. In fact, the speed of sound is directly proportional to square root of the temperature of the medium. That is, V is proportional to square root of T. So where T is the temperature of the gas on Kelvin scale. Now speed of sound in air increases by about 0.61 meter per second, ठीक है. So ये speed of sound in air increases by 0.61 meter per second for each degree Celsius rise in temperature. हर डिग्री सेल्सियस राइज में टेम्परेचर में ये स्पीड ऑफ साउंड जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करता है, ठीक है. Provided that the rise in temperature is not very large. So Vt is equal to V0 plus 0.61 into T. So velocity at T degree Celsius is velocity at 0, initial velocity plus 0.61 into the temperature difference, ठीक है. Example, the speed of sound in the dry still air at 0 degrees Celsius is 330 meter per second. At 25 degrees Celsius, the speed of sound will be V25. क्या हो गया? V0 plus 0.61 into T. V0 दे रखा है 330. 330 plus 0.61 into 25. तो ये 345.25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है. तो this is how you calculate the speed of sound at a higher temperature. तो बेसिकली आप देखो 0.61 मीटर पर सेकेंड हर डिग्री राइज के लिए ये वेरी करता है, ठीक है. तो 0.61 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर जाएगा फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर. तीसरा है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी. सो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर increases with increase in humidity in air. The density of water vapor is about 5/8 times the density of dry air at ordinary temperature. Therefore, increase of moisture in air tends to decrease the density of air. Hence, the speed of sound in the humid air is greater than the speed of sound in dry air. तो समझो speed of sound in air increases with increase in humidity. ठीक, कैसे, क्यों, उसका explanation क्या है?
Density of water vapor is 5/8 time the density of dry air at ordinary temperature. हमें पता है कि density पे inversely proportional है. Therefore, increase of moisture in air tends to decrease the density of air, and hence the speed of sound in the humid air is greater than the speed of sound in dry air. In other words, the sound travels faster in humid air than in dry air. फोर्थ अब कर लेते हैं effect of direction of wind. ठीक है. So this speed of sound increases or decreases according to the direction of travel of wind. तो ये जो speed of sound है increase करेगा और या डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ विंड. अगर विंड के ट्रैवल के अलोंग, विंड के डायरेक्शन के अलोंग अगर हम साउंड, अगर हम प्रोपगेट कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज. और अगर साउंड के प्रोपगेशन के अगेंस्ट विंड फ्लो ब्लो कर रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड विल डिक्रीज इन दैट केस. सो इफ विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, है ना, हवा उधर ही चल रही है जिधर साउंड ट्रैवल कर रही है, तो इफ विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, उस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाएगा. while if it is blowing in a direction opposite to that of sound, the speed of sound decreases. भाई हवा उल्टी दिशा में चल रही है तो हम लोगों को जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है स्लो हो जाएगा और देरी से कोई भी बात सुनाई पड़ेगी. If v is the speed of sound in still air and w is the speed of wind, the speed of sound becomes v plus w when wind blows in the direction of travel of sound, and speed of sound becomes v minus w when wind blows in the direction opposite to the direction of travel of sound. अब इसके बाद हम लोग तीन फैक्टर्स वो करेंगे जिन पे कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता है. सो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर. सेकेंड, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. एंड तीसरा, वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव. तो इन तीन चीज पे स्पीड ऑफ साउंड नहीं डिपेंड करता है. प्रेशर पे नहीं डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे नहीं डिपेंड करेगा, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पे भी स्पीड ऑफ साउंड नहीं डिपेंड करता है. सो effect of pressure, the speed of sound in a gas is independent of pressure. ठीक. So in the formula v is equal to gamma p by rho, the ratio p by rho remains unchanged with a change in pressure. So when the pressure increases, volume decreases, but mass remains unchanged, so density increases such that the ratio p by rho remains constant. For example, if pressure P of a gas is doubled, the volume becomes half, the density gets doubled. So P by rho, as a result, the P by rho does not change. ठीक है? Thus the speed of sound in a gas is independent of pressure. Second आ जाते हैं effect of amplitude of wave. So the speed of sound does not depend on the amplitude of sound wave. तीसरा, effect of wavelength or frequency of wave. The speed of sound does not depend on the wavelength of or frequency of sound wave. ठीक है. Now comparison. So comparison of speed of sound with speed of light. So here are the following four pairs of distinction between the propagation of sound and light waves. तो हमें पता है कि light travels much more faster than the sound. So light waves can travel in vacuum, but the sound waves cannot travel in vacuum. है ना, light waves को material medium की जरूरत नहीं है propagate करने के लिए, but sound waves को material medium की जरूरत है एक point से दूसरे point तक propagate करने के लिए. So this is the first point of difference, है ना, comparison of speed of sound with speed of light. So light waves can travel in vacuum, but sound waves cannot travel in vacuum. दूसरा है
Speed of light wave is 3 into 10 to the power 8 meter per second in air, which is about a million times greater than the speed of sound waves in air. ठीक है, जो speed of light waves है, right? So speed of light waves is 3 into 10 to the power 8 meter per second in air, which is about a million times greater than speed of sound waves in air. ठीक है ना? अब speed of light wave decreases in an optically denser medium, that is speed of light in water, in glass, while the speed of sound waves is more in solid, less in liquid and still less in gases. ठीक है, तो डेंसिटी के साथ स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करता है और ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा. The light waves are transverse electromagnetic waves, while the sound waves in air are the longitudinal mechanical waves. So this is the comparison of speed of sound with speed of light. Now, consequences of large difference in speed of sound and that of light. तो डे टू डे फिनोमिना, डे टू डे सिनेरियो में, सो ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये जो स्पीड डिफरेंस है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं. सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लार्ज डिफरेंस इन स्पीड ऑफ साउंड एंड दैट ऑफ लाइट. पहला है थंडर एंड लाइटिंग. सो इन थंडर light is seen much earlier than the speed when then the sound is of thunder is heard, although they are produced simultaneously. तो थंडर एंड लाइटिंग में, इन थंडर जो है, हम लोग जब बारिश होने वाली होती है तो, है ना, बादल की गरजने की आवाज बाद में सुनाई पड़ती है और बिजली पहले चमकती हुई दिखती है. सो लाइट इज सीन मच अर्लियर, राइट, द लाइटनिंग is seen much earlier than that of the sound of thunder, right? Although they are produced simultaneously. The reason is that light takes almost negligible time in comparison to sound in reaching us from the place of thunder, because speed of light is much more than the speed of sound. When the starter in an athletic event fires a gun, a spectator sitting at a distance hears the sound of fire a little later than the smoke is instantly seen. The reason is that, again, speed of light is much larger than the speed of sound. Now, B part of the chapter will do it in continuation. Infrasonic, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज. तो हम लोगों ने 3 फ्रीक्वेंसीज देखा था. साउंड का जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज तक. 20 हर्ट्ज से लेस वाला जो फ्रीक्वेंसी का साउंड है उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं. 20 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड जो है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं. ठीक है. So human ear is able to hear sound in a frequency range of about 20 hertz to 20,000 hertz or 20 kilohertz. That is the audible range of frequency. The audible range of frequency is 20 hertz to 20 kilohertz. We cannot hear sound of frequencies less than 20 hertz or more than 20 kilohertz. Actually, the audible range of frequency varies from person to person, and it also varies with the age of person. So audible range of frequency of a person decreases as he gets older, since his ears lose the hearing sensitivity to the high frequencies. So children can hear sounds of somewhat higher frequency, say up to 30 kilohertz, while an old person can hear sound only up to frequencies 12 kilohertz. So hence the audible range of frequency for an average person is considered to be from 20 hertz to 20 kilohertz. So from the audible range, even in the audible range, the human ear is not able to, human ear is not equally sensitive to all frequencies. The human ear is most sensitive in the range 2000 hertz to 3000 hertz, where it can hear even a very feeble sound. The sound of frequencies in the range 20 hertz to 20 kilohertz is called sonic or audible sound.
The sound of frequency less than 20 hertz is known as infrasonic sound or simply infrasonic, while sound of frequency greater than 20 kilohertz is known as ultrasound or ultrasonic sound. अब कुछ एनिमल्स हैं जो कि इंफ्रासोनिक साउंड को सुन भी सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, एंड देयर आर सर्टेन एनिमल्स which can listen to ultrasonic sound as well as produce an ultrasonic sound. तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों प्रोड्यूस और लिसन कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स कुछ होते हैं. So elephants and whales can produce infrasonic sound of frequencies less than 20 hertz. Some fishes can hear sound of frequencies in the range 1 hertz to 25 hertz. Some animals can produce ultrasonic sound and communicate in them. A road can hear sounds of frequencies up to nearly, a dog can hear sound of frequencies up to nearly 50 kilohertz, a bat up to about 100 kilohertz, while dolphin can hear sounds of even higher frequencies up to 150 kilohertz. Now, ultrasonic sound and its application. So we have read that sound of frequencies above 20,000 hertz is called the ultrasound. Ultrasound can travel quite freely in solid and liquids, but in gases, its intensity falls. So in a medium, it travels with the same speed with which the audible sound travels. In air, the speed of ultrasound is 330 meter per second. Now, properties of ultrasound. So, ultrasound has all properties similar to that of ordinary sound, but because of high frequencies, ultrasound has the following two additional properties which the audible sound does not possess. Pehla hai, the energy carried by the ultrasound is very high. Second, the ultrasound can travel along a well-defined straight path. It does not depend appreciably at the edges of an obstacle because of its small wavelength, that is, it has high directivity. The above two properties of ultrasound makes it very useful to us for many purposes. तो एक तो हाई डायरेक्टिविटी है और एनर्जी कैरिड बाय अल्ट्रासाउंड इज वेरी हाई, और दूसरा इसका डायरेक्टिविटी बहुत हाई है. ठीक है. सो इट ट्रेवल्स along a well-defined straight path for a very long distance. Now, application of ultrasound. First application. So, few applications of ultrasound are given below. Pehla, bats avoid obstacles in their path by producing and hearing the ultrasound. तो बैट्स क्या है, वो पहले प्रोड्यूस करती हैं अल्ट्रासाउंड को, और उसके आसपास कोई अगर ऑब्स्टिकल है तो वहां पर से लाइट रिफ्लेक्ट होके उस तक आएगी, है ना. तो लेट्स से एक बैट है, ठीक है. अब नाउ दिस बैट्स प्रोड्यूसेस एन अल्ट्रासाउंड. तो जितने टाइम में, मान लो टी टाइम में साउंड ट्रैवल करता है बैट से लेकर इस वॉल तक, और उतने ही टाइम में ये साउंड वॉल से लेकर बैट तक पहुंचेगा. तो ये कंटिन्यूसली स्क्वीक करता रहेगा बैट, और हम लोगों को ये पता चलता रहेगा, इस बैट को ये पता चलता रहेगा कि ये कितने डिस्टेंस पे है ऑब्स्टिकल से, और जब वो ऑब्स्टिकल को हिट करने वाला होगा तो जस्ट अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर लेता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ बैट्स कैन फ्लाई इवन इन द डार्क. Second is ultrasound is used for drilling holes for making cuts of desirable shape in materials.
सो इन मटेरियल्स लाइक ग्लास, तो ये जो अल्ट्रासाउंड है इसको हम लोग यूज करते हैं ड्रिल करने के लिए होल्स, है ना, मेकिंग फॉर कट्स ऑफ डिजायरेबल शेप इन मटेरियल लाइक ग्लास। तीसरा है फॉर क्लीनिंग द मिनिमम ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी, फॉर क्लीनिंग द माइन्यूट ऑब्जेक्ट such as the parts of watches and electronic component, ultrasound is used. अल्ट्रासाउंड क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है तो जो माइन्यूट डेटा है ना उस फ्रीक्वेंसी की वजह से वो भी वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने से जो उसमें गंदगी होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। सो ये जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स है इनको हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से साफ कर सकते हैं, हार्ड टू रीच प्लेसेस। सो फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन मेटल्स अल्ट्रासाउंड इज यूज। मेटल्स के अंदर क्या क्रैक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी एग्जांपल दिया था मेट्रो का, मेट्रो के पिलर्स में जो क्रैक हो गया था उसको चेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड की एक मशीन होती है जो कि यूजफुल होती है, ठीक है। Now, for detection of defects in metals, ultrasound is used. Ultrasound will pass through the object if there will be no defect, such as crack or cavity in the object, but there is some defect. But if there is some defect, a part of ultrasound will get reflected back. Fifth wala, for imaging the human organs, you ultrasound is widely used. So for imaging the human organs, ultrasound is widely used. Okay. So for imaging the human organs, ultrasound is widely used. Ultrasonography or ultrasound is used to obtain the images of patient's organ. तो कभी आपके पेट में दर्द हो रहा है या कुछ ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले डॉक्टर लिखता है अल्ट्रासाउंड करा के आइए, ठीक है। सच एज अल्ट्रासाउंड किस किस चीज का हो सकता है, लिवर का करा सकते हैं, गॉल ब्लैडर, यूटेरस एक्सेट्रा। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट स्टोन्स, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट स्टोन्स, ट्यूमर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बेसिकली हम लोग किडनी में अगर स्टोन हो गया उसको डिटेक्ट कर सकता है या फिर कहीं पे अगर ट्यूमर है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द हार्ट। Now, ultrasound is used in surgery to remove cataract and in kidneys to break the small stones into fine grains. In sonar, that is sound navigation and ranging. ठीक है. So in sonar, to detect and find the distance of object underwater, ultrasound is used. Now difference between ultrasonic and supersonic. Ultrasonic जिसका frequency 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा है, supersonic जिसका speed जो है वो ज़्यादा है, frequency उसका कम ही रहता है. So the word ultrasonic is used for ultrasound, that is sound of frequency above 20 kilohertz, while supersonic is used for objects which travels with a speed greater than the speed of sound in air. For example, Concorde jet planes and fighter planes. ठीक है. So ये हो गया हमारा difference between ultrasonic and supersonic sounds. सो नोट्स इतना ही है और चैप्टर में इतना ही है.
अब आप लोग क्या करो, एक्सरसाइज 8A है ना, एक्सरसाइज 8A निकाल लो ना। इसका हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किया था 8A का, न्यूमेरिकल्स तो कर लिए थे, क्वेश्चंस नहीं किए थे तुम लोगों ने। तो इसके क्वेश्चंस शुरू करो करना, नोट्स तुम्हारे पास हैं ही, उस नोट्स की मदद लो और उससे फिर क्वेश्चन के आंसर्स लिखो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, बस उसको लिखना होगा। तो क्वेश्चन लिखना होगा और उसके साथ आंसर लिखना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेस साउंड, तो उसका आंसर साउंड इज कॉज्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया पहला 8A का फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। आ रहा समझ में? यस। अपना अपना वीडियो ऑन कर लो, देखें क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो।